MCOM Part 2 Semester 4 we are doing IFRS and पहुंच गए हैं फाइनली चैप्टर 15 या यूनिट 15 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। बैलेंस शीट खत्म हो गई लेकिन कुछ इवेंट हुए बाद में। पैसा मिलने वाला था, मिल गया। सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था, वो माल वापस आ गया। किसी को देना था, वो दे दिया। ऑल ऑफ अ सडन कुछ लॉस हो गया, करेक्ट, और वो पैसा आया ही नहीं, करेक्ट। तो बैलेंस शीट तो हो गई लेकिन उसके बाद भी तो इवेंट कनेक्टेड है ना, क्योंकि हम लोग अक्रूड बेसिस पे भी अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वैसे कुछ प्रॉफिट्स या वैसे कुछ लॉसेस अगर हो जाते हैं फ्यूचर इवेंट में, दैट इज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो हाउ शुड वी रिप्रेजेंट दैट, करेक्ट। तो आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है अपना, वो उसके साथ डील करता है। टॉपिक छोटा सा प्यारा सा है, लॉजिकल है, डरने की जरूरत नहीं है। Objectives: the objective is to prescribe when an entity should adjust its financial statements for events after reporting period. Disclosure that an entity should give the about the date when the financial statements were approved for issues and about events after the reporting date. Scope क्या है? वही reporting date के बाद के सारे event cover करता है। Events after reporting period, these are the events which are favorable and unfavorable occurring between the end of the reporting period and the date on which financial statements are approved by the board of directors in case of a company and approving authority in the case of the other entities. Event occurring after the reporting date, that is adjusting event. These are the events that provide evidence of the condition at the end of reporting period. Okay, non-adjusting event, these are the indicative or conditions that occur after the reporting period. बराबर है, वो एविडेंस दे रहा है, ये इंडिकेटिव है कि ऐसा शायद हुआ होगा या ऐसा शायद होगा। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, एग्जिस्टिंग इवेंट, यस, एग्जांपल इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, कंगाल हो गया तो कुछ बैड डेब्ट्स ही हो गया ना बाय डिफॉल्ट वो। सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, fraud and error discovered, settlement of court case which may result in adjusting earlier provision or creating a new provision, cost of asset purchase, proceeds from assets sold, impairment assets है ना। फाइनेंशियल अगर आप ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 31 मार्च के बाद रेट चेंज हो गया, पेमेंट ज्यादा गई, लॉस हो गया, आपने उसको पता है ना फॉरेन करेंसी में। नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट में क्या है, देखो ये सारे फाइनेंशियल नेचर के हैं तो ये एडजस्ट करने ही पड़ेंगे। नॉन एग्जिस्टिंग में क्या, declining the market value of investment after the end of the reporting period but before authorization of issue of financial statements. Fire occurs after the reporting date, declaring dividend after the reporting period, business combination, discontinued operations, change in asset prices, litigation, ये अपने हाथ में थे ही नहीं लेकिन ये इवेंट हुए हैं, बराबर है। तो क्या करेंगे, find out whether the event has taken place from the balance sheet date to the date of approval of the accounts by the board. Finalization के टाइम लगता है ना। If yes, go to step 2. Step 2 क्या है, find out whether there is any reason to trigger the event. इससे कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ, yes. Find out whether the event has an evidence related to the reason. आग लगी, देखिए लॉस हुआ, है। If yes, it is an existing event. कैसे लगी पता नहीं है, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। सो कुछ भी हो सकते हैं इवेंट ऐसे। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड ऑन इक्विटी अगर दिया है, डिक्लेयर किया आपने बिफोर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो लायबिलिटी है। डिक्लेयर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, बाद में देख लेंगे, डू नॉट रिकॉग्नाइज इन द करंट ईयर, है ना। फाइनलाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद अगर डिक्लेयर किया है तो वो तो नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। प्रीवियस ईयर्स डिविडेंड पे करते हो ना, दिखाया है। ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, वो तो बाय डिफॉल्ट देना ही है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट फॉर डिविडेंड, क्योंकि वो तो आपकी कंपलसरी लायबिलिटी है, अदर लायबिलिटी आपने देख लिया, करेक्ट। इंटरिम डिविडेंड दिया तो हाँ, वो साल के एंड में बताना पड़ेगा, करेक्ट। अरे भगवान, जोरदार, हाँ, गर्मी है। Interim dividend declared and paid during the financial year is different from proposed dividend after the end of the year. It is recognized as a distribution to equity shareholders in the financial statement. Going concern, business is going on and on and on, right? So previous year's adjustment can be shown in this year. This year's can be adjusted in next year. Right? The entity shall not prepare the financial statement on a going on concern basis
इफ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू लिक्विडेट द कंपनी, बंदी करना चाहते हो, cease trading, it has no realistic alternative but to do so after the reporting period, but after the financial statements are authorized for issue. Disclosure, yes, करना पड़ेगा as per Indian Accounting Standard 10. Following information about the events after reporting period should be disclosed. Nature of event, date of event and उसका financial impact. बराबर है. Distribution of non-cash asset to owner. An entity can be distributed dividend to the owner either in cash or in non-cash asset. Liability to pay dividend is recognized when it is appropriately authorized and it is no longer at the discretion of the entity. It means it is declared and approved by the shareholder. Measurement of non-cash asset as distribution to owners. कोई गाली दे रहा है. Distribute non-cash assets to the owner. Dividend payable is recognized at the fair value of non-cash assets. Give an option to the owner to opt for either cash or non-cash asset. आपको डिविडेंड कैश में चाहिए या उतना हम आपको शेयर्स दे दे बोनस के फॉर्म में. If non-cash assets are distributable are under the same control before the and after distribution, then such distribution is beyond the scope of this standard. Disclosure करना पड़ेगा. Disclosure in the financial statement difference of settlement between carrying amount of the asset distributed and carrying amount of dividend payable. Disclose in the notes to accounts, सब कुछ बताना पड़ेगा. Nature of assets to be distributed, carrying amount of such assets, estimated fair value of such assets. Okay. Increase and decrease वाला रह गया बराबर in carrying amount due to change in the fair value. Sums पे समझ जाएगा, don't worry, आ गए. Elora Limited has announced its interim result for the quarter ending 30th June 2024 on 4th July 2024. The accounts were approved in the AGM for the year 23-24 was not held. Barabar? The accounts were approved by the directors in the meeting held on 17th July 24. 3 महीने बाद, बराबर? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. बराबर? कहाँ गया? What will be the period after reporting date as per the Indian Accounting Standard? तो 17 जुलाई को अप्रूव किया है. In the above case, accounts are approved on 17 July. Therefore, the period after the reporting date will be 31st March to 17 July. इसके बीच जो भी हुआ है ट्रांजैक्शन उसको आपको डील करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा. Prudent Limited invested in equity shares of Proud Limited worth 9 lakhs at the end of reporting period on 31st March 2025. Okay. After the end of the reporting period but before the approval of the financial statement, it has been found that the value of investment has inflated by 1 lakh by the computation error. 1 लाख से ज़्यादा हो गई थी. State whether such event should be adjusted in financial statement for the year 24-25. Excuse me, sorry. The event occurred after the balance sheet date and before the approval. The fraud took place before the end of reporting period, hence the condition was existing. It was detected at the end of the reporting period but before the approval financial statement. तो fraud तो हुआ है, बताना पड़ेगा, mention करना पड़ेगा. Excel Limited has received a notice from Income Tax Department for 15 lakhs for 23-24. The company verified the notice and found that the certain exemptions claimed were denied by IT officer. The matter was referred to the court. After hearing, the court also rejected the claim. The company is liable to pay additional tax. State whether the company shall account for the year 23-24. करना पड़ेगा, कोर्ट ने भी बोला है ना. Assume that the event occurred between the date of balance sheet and approval of account. There is an evidence of the liability available. Court is further evidence available. Hence, it is an adjustment. It should be adjusted into the accounts. कायदे से हो गया ना अब तो. Omega Limited purchased a machinery costing 5 lakhs from MN Company during 24-24. The company has not sent the final bill for the same. The bill was sent by MN Company on 15th April यानी 31st March के बाद. The accounts were approved on 25th April. Should the company include the machinery in 24-25 or 25-26? देखो बिल कब आया है 15th अप्रैल को और अकाउंट्स अप्रूव कब हुए 25th अप्रैल को. उसके पहले बिल आ गया है ना.
यानी 24-25 में ही एसेट आना चाहिए। द इवेंट अकर्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द अकाउंट्स। द कंडीशन एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। The bill is further evidence available relating to the conditions, hence it should be existed in 24-25. समझा? Yes? I hope you are finding it easy. Okay? अब IFRS का पेपर कर दो ना सर, पॉसिबल नहीं होगा भैया, मेरे पास नहीं है पेपर। ओके, हाइप करो, स्वाइप करो, कमेंट के सेक्शन में जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ अपने, अच्छे खासे बढ़ाएंगे तो अपन जाएंगे फिर सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, माँ की आंख। यूट्यूबर नहीं बनेंगे लेकिन यूट्यूब के सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे। मुझे सिखाने की खुशी तो क्लास में ही मिलती है, हाँ यहाँ सिखा रहा हूँ क्योंकि आपके कमेंट आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है थोड़ा।